Okay, so quickly we'll go to whatever we have done in previous sessions. So we'll just quickly revise the part whichever we have done in my last lecture. So we have gone through java.net package, which is nothing but basic package for doing your communication using computer or a devices. It works on two protocol. One is TCP, another is UDP protocol. Okay, so TCP is what? Write one word for TCP protocol. Student, write one word for TCP protocol, whether it is reliable or unreliable protocol. Then we have seen how TCP or IP works whenever you do what? Communicate using a particular channel or over a network. Then after that, we have seen different advantage of this TCP, why we should use TCP over UDP. Okay. Then we have seen concept of socket. What is socket? What is need of socket? That we have seen. Okay, so socket is nothing but address, and then every socket have certain ports, and ports are nothing but your room numbers. So wherever you want to communicate, you need to use what? Sockets and port. I hope this point was clear in my last session. Then we have seen this diagram, ports. There are reserve ports. Yes, Salma, reliable protocol, right? Then there is reserve ports. They are range from 0 to 1023. So you can't use this port number. You can use this port number, but your program will not run. It is going to show you already bind. Okay, port number already bind. This kind of error it is going to show you. So it's not like that if you take it, then it is going to show you some error. No error, it will show you exception at runtime. Then we have started the using classes of java.net package. We have seen server socket and socket package. हमने उसके constructor देखे थे, and we have also seen कि where to use server socket and where to use socket. So now all of you quickly type server socket. सर्वर में यूज होता है कि क्लाइंट में यूज होता है, और सॉकेट कहाँ यूज होता है? सर्वर में यूज होता है कि क्लाइंट में? जस्ट टाइप दिस आंसर. Where I use server socket, client side or server side? Okay, so it is used as server side, and socket is used as client side. Then the very basic constructor which we use for server socket is what? You need to pass only the port number. So by passing port number, you can make sure that your server is running on this port number. Okay, then next we have as socket, which is taking two parameter. One is your host, nothing but your IP address you can pass, or you can pass local machine name also, or machine name or DNS name also, and then you have to pass port number. Yes, right. So then ये सब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. ये पूरा जस्ट मैं आपको एक बार क्विकली पीपीटी गो थ्रू करवा रही हूँ, सो दैट you you get refreshed of this concept. Then student, we did what? We whatever communication we are doing using only java.io package. So there is a classes in java.io package like input stream, output stream, reader, writer, buffer writer, data input stream, data output stream, scanner. So many classes we have for doing the communication. So among them we are using few of the classes. Like in my last session we have used buffer reader and input stream. Okay, so now today what I will be doing, instead of using this buffer reader, I have changed. So I'm going to show you how you can do communication over a network using scanner class as well as data input stream, so that you should be what versatility while writing your program. You should know different classes which you can use for taking input or passing or sending data to a सर्वर. ओके, सो देन ये हमने पूरा देख लिया था. सर्वर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? हमको सॉकेट बनाना रहता है, एक्सेप्ट मेथड लिखना रहता है जो कि एक ब्लॉकिंग मेथड है, एंड देन उसके बाद आपको अगर रीड करना है, राइट करना है, तो अप्रोप्रिएट क्लासेस आपको बनाना पड़ेगा और डेटा सेंड करना पड़ेगा, एंड फाइनली क्लोज करना पड़ेगा सॉकेट. Closing socket is not mandatory, but I must say it is a best practice. So always
follow the best practices whenever you are learning any of the programming language. सिमिलरली क्लाइंट साइड पे भी आपको थोड़े स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. आपको कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा, वेदर यू वांट टू रीड डेटा और राइट डेटा, वो वाला स्टेप्स आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और बाद में क्लोज करना पड़ेगा. So that's what we did in last lecture. Now I'm moving with the same concept. अब आज मैं आपको क्या बताऊंगी, I'm going to send one number to the server और सर्वर उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करेगा और उसका रिजल्ट रिसीवर को और क्लाइंट को रिटर्न करेगा. ये पहला प्रोग्राम करेंगे. और दूसरे प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, GUI यूज करके पूरा क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाएंगे. मतलब क्लाइंट डेटा सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर क्लाइंट को सेंड करेगा और वो डेटा आपको टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट फील्ड में आपको डेटा डिस्प्ले होगा. ओके, सो नॉट एग्जैक्टली चार्ट लाइक आप जैसे व्हाट्सएप पे चार्ट करते हो, मैंने उतना फुल्ली डेवलप नहीं किया है. आई एम जस्ट वांट टू गिव यू कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट यूजिंग दिस socket programming you can do a fabulous application or you can create a fantastic applications. Okay, so now let me go with netbeans. So you can use netbeans, you can use IntelliJ, you can use notepad. आप कुछ भी, कोई भी एडिटर आप यूज करके ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नेटवर्किंग करना है, सो यू हैव टू इंस्टॉल अ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी और you have to install a extra jar file, nothing like that. You can do this coding on notepad also. I will show you. अगर आपको चाहिए तो मैं notepad में भी बता सकती हूँ कि how you can run two command prompt simultaneously और कैसे notepad पे आप कर सकते हो. बिकॉज IDE तो सब कुछ मुझे रेडीमेड करके देता है, सिर्फ मुझे अपने हिसाब से उसको रन करना है. बट नोटपैड पे आपको दो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने पड़ेंगे, फिर रन करना पड़ेगा. इफ यू वांट लेट मी नो इन चैट बॉक्स की अगर आपको नोटपैड पे भी चाहिए कि कैसे करना है, तो मैं वो भी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी. नाउ आई एम यूजिंग नेटबीन्स. नेटबीन्स का आप कोई भी वर्जन ले लो, आप उसमें एप्लीकेशंस बना सकते हो. ठीक है, सो नाउ लेट मी स्टार्ट विथ अ प्रोजेक्ट. सो हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था. यहाँ पे अभी मैं कंसोल एप्लीकेशन कर रही हूँ. व्हाट आई एम थिंकिंग टू लेट्स डू वन प्रोग्राम जहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट सर्वर को नंबर सेंड करेगा. ओके, नोटपैड का आई शो यू. ठीक है, ये प्रोग्राम हो जाने दो, इसी प्रोग्राम को मैं नोटपैड पे भी रन करके बताती हूँ. Okay, so what I'm thinking to take one program like client is going to send number to a server. सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा वो नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है कि जीरो नंबर है. ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं. अगर आपको ये प्रोग्राम आ गया तो आप फैक्टोरियल कर सकते हो, फिबोनाची कर सकते हो, कोई भी टाइप का प्रोग्रामिंग कर सकते हो. जस्ट आपको पता रहना चाहिए मैसेजेस कैसे शेयर करते हैं. सो नाउ let me give a name, application project name as server. Okay, positive server or number server, that will be a better name. So number server, browse your folder and click on finish button. Okay, ये एक बना लिया. अभी दूसरा प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं, क्लाइंट के लिए बना लेते हैं, दोनों साथ साथ में करते हैं. Okay, so this is what my number server and then source package and then we have a number.java. ये आपकी java file automatically बन गई. Fine. Now then next we have I'm creating a new project again and then in that I'm giving name as number client and then let me finish. ये फोल्डर आपको ब्राउज करना है. मेन क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, तो आपको और कुछ नहीं करना है. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों प्रोग्राम बन गए. स्टूडेंट इवन यू कैन कीप द प्रोग्राम इन द सेम सोर्स पैकेज ऑल्सो. अगर आप GUI बेस्ड करते हो ना, तो सेम सोर्स पैकेज में भी ले सकते हो. बट अगर कंसोल एप्लीकेशन करते हो तो आपके एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन हो सकता है, इसलिए मुझे दो प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है. ओके, नाउ आई एम डिलीटिंग ऑल दिस अननेसेसरी पार्ट. ओके, जो ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था मैं इसलिए डिलीट कर रही हूँ सो दैट आपको स्क्रीन पे जो हमको रिक्वायर्ड है बस वही दिखे. नाउ स्टूडेंट लेट्स बिगिन.
सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर सर्वर में जाते हैं और ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं. दैट इज मैंडेटरी, बिकॉज आपका बिना ट्राई कैच ब्लॉक के कुछ होने वाला नहीं है. ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, आईओ एक्सेप्शन, अनसपोर्टेड एक्सेप्शन और सर्वर नॉट फाउंड काइंड ऑफ एक्सेप्शन. नाउ अब आप बताओ इसके बाद में क्या करूं, क्या क्रिएट करूं, सर्वर सॉकेट और सॉकेट. शुड आई क्रिएट सॉकेट और सर्वर सॉकेट? ओके ओके, just let me know whether it is okay. Yes, I'll increase the font, कोई बात नहीं. जस्ट मुझे आप लोग बता दो कि फॉन्ट ओके. नाउ इट्स ओके हरतेज? ओके, आई थिंक नाउ इट्स ओके. ठीक है. सो yes, we have to create object of server socket. Now others please reply. सर्वर सॉकेट कैसे बनाते हैं आप? सर्वर सॉकेट, उसका कोई भी वेरिएबल नेम दो. मैं एस दे रही हूँ, एस फॉर सर्वर, एस फॉर सॉकेट इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट. ओके. अब इसमें आपको क्या पास करना पड़ेगा? पोर्ट नंबर. कोई भी पोर्ट नंबर पास कर दो. तो मैं 7890 मैंने पास किया है पोर्ट नंबर. एंड यू कैन सी मेरा पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट हो गया java.net में. क्लास है सर्वर सॉकेट. नाउ सिंस आई हैव ओपन दिस ट्राई, तो मुझे उसका करस्पॉन्डिंग कैच भी लिखना पड़ेगा. आई एम राइटिंग सुपर क्लास एक्सेप्शन. आप स्पेसिफिक क्लासेस भी लिख सकते हो. एंड देन आई एम प्रिंटिंग इफ एनी मैसेज इज देयर, तो वो मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाली हूँ. ठीक है. ओके, तो ये हमने सर्वर सॉकेट बना दिया, सर्वर सॉकेट को रन कर दिया. अब नेक्स्ट क्या लिखना है? नेक्स्ट ब्लॉकिंग वाला लाइन लिखना है. यस सलमा, राइट. सॉकेट एस इक्वल टू एस एस डॉट एक्सेप्ट. दिस इज गोइंग टू इनिशिएट योर कम्युनिकेशन. ठीक है. अब ये पैकेज आपको इंपोर्ट करना है. सो इट इज आस्किंग मी टू इंपोर्ट पैकेज. देन आई एम गोइंग टू प्रिंट मैसेज एस आउट. व्हाट मैसेज आई एम गोइंग टू प्रिंट? सर्वर स्टार्टेड. ठीक है. आप कोई भी अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करो, जैसे कि फीडबैक मिले, हाँ सर्वर स्टार्ट हो गया. ओके, सो सर्वर स्टार्टेड. नाउ आई विल गो टू क्लाइंट. मैं साइमल्टेनियसली कर रही हूँ प्रोग्राम, जैसे कि आपको समझे कि कहाँ पे क्या स्टेप्स आता है. Then I'm going to this client program and then again I'm writing try catch block. ठीक है. And then s out. I'm not printing this in double quotes because double quotes में कर दोगे तो as it is print होगा. Okay, now tell me what line I should write. क्या लिखना है? क्या लिखना है? सॉकेट. यस, सॉकेट एस इज इक्वल टू न्यू सॉकेट. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू टू राइट लोकल होस्ट. आज मैं थोड़ा कुछ अलग लिख रही हूँ, जैसे कि इफ यू आर डूइंग फ्रॉम समवेयर एल्स, आपको ऐसी कुछ लाइन दिखे तो आप परेशान नहीं हो. इट्स अ सेम लाइन. you can pass IP address. Now I'm running my laptop is not in LAN, तो normal machine का IP address डिफॉल्ट ये रहता है 127.0.01. अगर आपको ये नहीं पास करना है तो आप लोकल होस्ट भी पास कर सकते हो. अब यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या पास करेंगे? वॉट एवर इज द पोर्ट नंबर ऑफ योर सर्वर, वेर एवर योर सर्वर इज रनिंग, सेम पोर्ट नंबर आप पास कर दो क्लाइंट को भी. ओके, तो 7890 यहाँ पे भी पास कर दिया. एरर इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आई हैव नॉट इम्पोर्टेड पैकेज. सो जस्ट नाउ आई हैव इम्पोर्टेड पैकेज. डन. इतना समझ गया? ओके, सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब क्या करते हैं, थोड़ा इनपुट आउटपुट करते हैं. स्टूडेंट प्लीज शेयर द लिंक एंड आस्क अदर्स टू ज्वाइन सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस वेरी यूजफुल सेशन. अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऑब्जेक्ट्स बनाती हूँ. किसके ऑब्जेक्ट्स? रीडिंग और राइटिंग करने के लिए. सो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि आप रीडिंग के लिए बफर्ड रीडर यूज करो. बट नाउ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू, यू कैन यूज स्कैनर ऑल्सो, बट देर इज अ स्लाइटली डिफरेंट सिंटैक्स. यू हैव स्कैनर ब्रैकेट में. इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम कंसोल, आप यहाँ पे क्या देते हो? system.in देते हो, है ना. बट सर्वर कंसोल से रीड करने वाला है क्या नंबर? नहीं. सर्वर कहाँ से रीड करने वाला है नंबर?
client से. And what is client? Client points to what? Which object? Yes, object. Okay, thank you, Manthan. Then next, I'm going to do what? I'm going to write s dot get input stream, and then I have to import this scanner. स्टूडेंट, इज दिस लाइन क्लियर टू यू? कल जो बड़ा सा लाइन था ना, बफर्ड रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, फिर ब्रैकेट में न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, फिर उसके अंदर एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, उसको आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, instead of writing system.in, because we are not interested in accepting number from user, we are interested in taking data which are coming from my client. तो इसलिए मैंने s डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम लिया है. गेट इनपुट स्ट्रीम क्या करता है? रीड करता है. क्या रीड करेगा? जो डेटा क्लाइंट ने सेंड किया है. यस, ओके. दूसरा मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रिंट स्ट्रीम. व्हाट इज दिस प्रिंट स्ट्रीम? प्रिंट स्ट्रीम हम क्यों यूज करेंगे? जब मुझे क्या करना है, क्लाइंट को डेटा सेंड करना है, तो मैं क्या करूंगी? प्रिंट स्ट्रीम यूज करूंगी. देन न्यू print stream. Okay, and in bracket what I'm going to do, I'm going to write at s dot get output stream. I hope this line is clear to you all. स्कैनर मैंने यूज किया है रीड करने के लिए, बट कंसोल का डेटा नहीं, क्लाइंट का डेटा रीड करने के लिए. एंड देन प्रिंट स्ट्रीम आई एम टेकिंग टू सेंड डेटा टू सर्वर. सो दिस इज गोइंग टू सेंड, और हम लोग और क्या बोल सकते हैं? राइट बोल सकते हैं. Okay. Yes, is this two line clear to you all? Quickly type yes if it is clear. फटाफट सब लोग yes टाइप करो if the line is clear. अब ये तो हमने इधर बना दिया. नाउ आई विल गो टू अगेन क्लाइंट. ठीक है, अब क्लाइंट में भी जाके आई एम गोइंग टू डू द सेम स्टेप. सो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू कंप्लीट चैट एप्लीकेशन ऑल्सो. सो ओके, सो ये मैंने यहाँ पे भी दोनों ऑब्जेक्ट्स बना दिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे भी तो डेटा सेंड करना है और रिसीव करना है. आई एम गोइंग टू सेंड द नंबर एंड आई एम गोइंग टू रिसीव द नंबर. ओके, सो अब ये इतना बेसिक कर दिया. मेरा एम क्या है? व्हाट इज माय एम? माय एम इज व्हाट? क्लाइंट इज गोइंग टू सेंड नंबर टू अ सर्वर, बट क्लाइंट को वो नंबर तो होना चाहिए ना. तो क्लाइंट वो नंबर कहाँ से लेगा? यूजर से लेगा. सो नाउ यू ऑल टेल मी, टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर मैं क्या करूंगी? स्कैनर ही यूज करूंगी. ठीक है, एक को स्कैनर 1 देती हूँ, एक को स्कैनर 2. बट इन माई स्कैनर कंस्ट्रक्टर आई एम गोइंग टू राइट व्हाट? आई एम गोइंग टू राइट system dot in. I hope this line is clear why I am writing this, because मेरा एम क्या है? यहाँ से मैं नंबर सेंड करूंगी, बट वो नंबर हम किससे ले रहे हैं? यूजर से ले रहे हैं. अब मैं यूजर को क्या प्रिंट कर रही हूँ? एंटर एनी नंबर. ओके, so user is going to enter the number. Now I am going to read that number. अब इधर मुझे कुछ कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करना है, so I am reading that number in string format only, because client job is not to do calculation. Client job is to what? Accept the input and send it to the server. Who will perform calculation? Server will perform. So it is the lookout of server to convert the string into number. So I'm going to read this number. तो मैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिख दे रही हूँ. अभी नंबर मैंने क्या किया? ओके, एस इज ऑलरेडी डिफाइंड. ओके, एस सॉकेट के लिए डिफाइंड है, तो मैं इसको str कर दे रही हूँ. नाउ आई हैव नंबर. अब मुझे नंबर सेंड करना है, तो जब मुझे नंबर सेंड करना है तो मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया. अब क्या करूंगी? मैं इस नंबर को सेंड करूंगी बाय यूजिंग विच मेथड? बाय यूजिंग व्हाट? println मेथड. सो ps डॉट प्रिंट, और println क्या भेज रहे हैं हम लोग? str. yes, please go through the lines and tell me whether it's clear or not.
Why I am writing this line? For accepting user input. And why I am writing this line? For sending data to client. ठीक है, मैं कमेंट्स के साथ लिख दे रही हूँ जैसे आप लोग को क्लियर हो जाए. ओके, तो क्लाइंट के लिए डेटा सेंड करने के लिए भेज दिया. वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम हैप्पी यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. अभी तक इसका यूज नहीं किया है, ये कब यूज करेंगे? जब सर्वर रिजल्ट रिटर्न करेगा. ओके, सो क्लाइंट हैज सेंड द डेटा टू सर्वर. अब सर्वर क्या करेगा? उसको रीड करेगा. तो रीड करने के लिए हम लोग ने स्कैनर का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना दिया है. अब मैं क्या करती हूँ? स्ट्रिंग msg इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन. ओके, तो यू माइट बी वंडरिंग कि ये यही नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कंसोल से रीड कर रहा था और यही नेक्स्ट लाइन यहाँ क्लाइंट का डेटा रीड कर रहा है. बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर स्टूडेंट, इन क्लाइंट प्रोग्राम ये पैरामीटर सिस्टम डॉट इन दिया है और यहाँ पे हमने गेट इनपुट स्ट्रीम दिया है. So now I have my number. What I'm going to do? I'm going to convert this number into integer. So int n is equal to वही अपना integer dot parseInt wrapper class use कर लो और bracket में msg pass कर लो. Why I'm converting it into integer? Because I want to check whether it is greater, lesser or not. Okay. So therefore I have converted it into integer. Now I'm going to write logic. So what is my logic? If n is greater than 0. भाई ये ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या मैसेज प्रिंट करूंगी? मैं मैसेज प्रिंट करूंगी दैट नंबर इज पॉजिटिव. तो मुझे प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लगेगा, तो प्रिंट स्ट्रीम को मैं थोड़ा ऊपर डिक्लेयर कर दे रही हूँ. ओके, सो इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन ps डॉट प्रिंट. क्या प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करेंगे पॉजिटिव. व्हाट इज पॉजिटिव? msg, जो आपका नंबर है. Okay, else if it is less than 0, then same message but with negative. Number is negative. Okay, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, मतलब क्या है? 0 है. ओके ओके, हो गया. यहाँ पे हमने रीड किया डेटा. कहाँ, किसका डेटा रीड किया? क्लाइंट का. उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म किया और डेटा सेंड कर दिया. अब जब डेटा सेंड कर दिया तो डेटा यहाँ पे रीड भी करना पड़ेगा. नाउ आई हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर बट बाय पासिंग इनपुट स्ट्रीम. तो अब मैं इसको रीड करूंगी. सो sc2 डॉट, गलती से sc1 मत लिख देना. sc1 लिखोगे तो वो कंसोल से रीड करने लगेगा. sc2 डॉट रीड लाइन, sorry, not read line, it is sc2 dot next line, एंड देन उसको हम किस में स्टोर करते हैं? स्ट्रिंग msg में स्टोर करते हैं. और बाद में मैं क्या करती हूँ? एस आउट कर दूंगी msg. होपफुली रन होना चाहिए एंड आउटपुट आना चाहिए. लेट्स सी. सो पहले सर्वर को रन करेंगे. ओके, अब किसको रन करेंगे? क्लाइंट को रन करते हैं. सो क्लाइंट बोल रहा है एंटर नंबर एंड कैन यू सी सर्वर पे सर्वर स्टार्टेड आ गया. क्यों? क्योंकि एक क्लाइंट ने कनेक्ट कर लिया ना. यस, सो इट इज आस्किंग मी एंटर नंबर. सो आई एम एंटरिंग नंबर. आई एम एंटरिंग 3. so it has gone to server now. Okay, let me see where I have done mistake. Just give me a moment, student. Let me check out where I have done mistake.
Okay, okay, 1 second. Just give me time to check this. So open also. ओके, माइट बी मैंने क्लोज नहीं किया है, शायद वो एक रीजन हो सकता है, बट आई एम नॉट एग्री विद दैट पार्ट. सो एक बार क्लोज करके देख लेती हूँ. ओके, लेट मी गिव इट टाइम. शायद ये कल भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था. देन अगेन आई क्लोज इट एंड आई स्टार्टेड, सो इट हैज गिवन मी आउटपुट. सो मीनवाइल आई एम गोइंग टू ओपन नोटपैड, और तब तक मैं आपको नोटपैड पे बता देती हूँ सेम प्रोग्राम मैंने किया है. इट शुड रन. So I'm going to open two notepads. So those who wanted to see how we can do with notepad, उनके लिए है. मैंने दो नोटपैड ओपन किया है. जब तक मेरा पीछे ये नेटबीन्स रन हो रहा है, मैं वेट कर रही हूँ. व्हाई आई एम नॉट गेटिंग आउटपुट. सो ओके, सो लेट मी चेक. सो सर्वर का प्रोग्राम. सो दिस प्रोग्राम आई हैव डन फॉर इवेंट नोड. ये यहाँ पे जावा सी. ओके, सो मेरे दोनों प्रोग्राम कंपाइल हो गए हैं. आई स्टार्ट माय सर्वर. यहाँ से क्लाइंट स्टार्ट कर देती हूँ. तो कनेक्शन एस्टेब्लिश, एंटर एनी नंबर. 4 मैंने दिया, 4 इज पॉजिटिव बता रहा है. ठीक है, वहां पे क्यों नहीं बता रहा है? जस्ट आई हैव टू चेक लाइंस. -90 कुछ दे देती हूँ, इज नेगेटिव. और मैंने दे दिया 0, तो 0 बता रहा है. कैन यू सी स्टूडेंट? मैंने ना आज स्कैनर के ऊपर ट्राई किया था, मुझे लग रहा है स्कैनर वर्क नहीं हो रहा है. ओके, डू यू हैव एनी डाउट? Okay, okay, Jagraj. Sometime Jagraj is saying NetBeans gives output error sometime. So yesterday also it happened with me. I was not getting output during my session. Then suddenly I closed my program and then I rerun it. Then it has given me output. Maybe that might be the reason, because logic is same, everything is same, so it should give output. If you want, let me copy this code in notepad और मैं run करके बताती हूँ, just to confirm whether scanner is working or not. Okay, if this concept is clear, then you can write program, but I want to confirm why it is this scanner is giving problem in NetBeans or like that. So एक मैं फटाफट नोटपैड में इसको सेव करती हूँ. जो अभी आपको प्रोग्राम रन किया ना, दैट आई हैव डन यूजिंग बफर्ड रीडर. ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने बफर रीडर यूज किया, बट आई वांटेड टू अवॉइड दिस बफर्ड रीडर बिकॉज ऑफ दिस बिग लाइन. सो मैं फटाक से एक नोटपैड ओपन करती हूँ और उसमें कॉपी को पेस्ट करती हूँ. एंड नंबर सर्वर.
if any problem in my code will come to know, probably हो सकता है. क्लाइंट का कोड भी मैं कॉपी करती हूँ. Okay, so let's try the program now. It's my bad. कल भी नहीं वर्क हुआ था. Okay, no problem. Java C. कहाँ पे सेव किया मैंने? It has gone to Java programs. Okay, so Salma, you wanted with Notepad, so you can see God has heard your prayer, and I'm running with Notepad. Actually, I didn't wanted today to run with Notepad and command prompt, but हो गया क्योंकि नेटबिन्स में फटाफट हो जाता है. ये कंपाइल वम्पाइल का लाइन नहीं लिखना पड़ता है. तो चलो लिख देते हैं जावा सी नंबर, आपका नंबर क्लाइंट डॉट जावा. किसी को भी पहले कंपाइल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जावा सी, देर इज नो प्रॉब्लम इन माई प्रोग्राम. सो नंबर सर्वर डॉट जावा. अब रन करते हैं नंबर सर्वर को. ओके, यहाँ से रन करते हैं. Okay, so some problem in my code only. It's not working there. Uh, why you want to see dot class? Student, I want to get rid of this problem. Why I'm getting this problem? Let me see. Can you all give me 2 minutes to check out what is the problem? Why scanner is not working? Get input stream. Okay, I didn't wrote that line in while loop, so probably let me put that while loop. So I forgot to write while loop, but वो तो main reason नहीं होना चाहिए. Student, give me a moment. So to continuously run your server, I'm writing this in while loop. While लिखा तो while को close भी करना पड़ेगा. ओके, जेवीएम ऑलरेडी बाइंड बता रहा है स्टूडेंट, क्योंकि कैन यू सी व्हाट एरर आई एम गेटिंग. गुड, यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ एरर बिकॉज आपको समझेगा. व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वाज सरप्राइज टू गेट दिस एरर. ये क्या आ रहा है, ये क्यों आता है जब आप ऑलरेडी रन किए रहते हो. कैन यू सी मेरा सर्वर ऑलरेडी ऑन है और फिर से मैं उसी पोर्ट पे उसी प्रोग्राम को रन कर रही हूँ नेटबीन से. तो अगर एक प्रोग्राम ऑलरेडी ऑन है उसी पोर्ट पे, आप दूसरा प्रोग्राम रन नहीं कर सकते. अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब फिर से मैं रन करती हूँ. तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया. क्लाइंट को रन करते हैं.
Okay, it's in running mode, therefore it is not allowing me to change. I just want to check whether I'm getting that number or not. तो स्टूडेंट यू कैन सी मुझे वो नंबर ही नहीं मिल रहा है. ओके 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 ओके. You can run multiple programs. You can run multiple program at the same server with different port. Same port you can't run. Yes, same port you can't run. The one port is designated for one service that we discussed yesterday. Yes, of course, scanner is imported. I'm using NetBeans, so it is imported automatically. Student, it is not sending receiving number only. So probably ये line s dot get output stream. Okay, if it doesn't work with scanner, then I'll go with buffer reader only. But I tried this program, then only I'm showing you because I was thinking ki student get ma'am, that buffer reader line is too lengthy. Okay, okay, my student, I did a big mistake. The line I wrote is print. It should be print ln. For sending data, I have to write print ln, not print. ठीक है. Okay, see how silly mistake I did. Can you see I'm getting error connection refused. मैंने सर्वर ऑन नहीं किया खुशी के मारे तो मुझे कनेक्शन रिफ्यूज एरर आ रहा है. सो नाउ माय सर्वर इज रनिंग. चलो क्लाइंट भी रन करते हैं और एक नंबर डाल देते हैं, कोई नेगेटिव नंबर डाल देते हैं. तो आई एम गेटिंग -12 इज नेगेटिव. You see this way what happens, you get sometime error और एक सिल्ली सी मिस्टेक करके आप मेरे जैसे ढूंढते बैठोगे. Okay, did you all understood, student? Now this program is working perfectly fine. सो रिमेंबर द काइंड ऑफ एरर ऑल्सो. अगर आप इस सर्वर को ऑलरेडी आपने सर्वर रन नहीं किया है और आप क्लाइंट को ट्राई कर रहे हो रन करने का, तो आपको एरर आएगा कनेक्शन रिफ्यूज्ड. और अगर आपने ऑलरेडी सर्वर को रन किए हो और फिर से एक और सर्वर को रन करना चाहते हो, देन यू विल बी गेटिंग एरर एज जेवीएम ऑलरेडी बाइंड. दिस काइंड ऑफ एरर यू विल बी गेटिंग. ओके, so did you understood everyone? Is this clear to you? So now you can see यहाँ पे हमने क्या किया है, टू वे कम्युनिकेशन किया है. क्लाइंट ने सर्वर को नंबर सेंड किया, सर्वर ने उसको रीड किया और फिर सर्वर क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है क्लाइंट को और क्लाइंट ने उसको क्या किया, फिर से प्रिंट किया. यस, वेरी गुड स्टूडेंट. नाउ यू कैन ट्राई एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग दिस. आप फैक्टोरियल, फिबोनाची, आपके जो फेमस फेमस हो छोटे मोटे प्रोग्राम है ना, वो कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो. एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम यू कैन डू विद दिस. इफ दिस इज क्लियर, देन आई एम मूविंग विद द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ द टू वे कम्युनिकेशन. आज का मेरा, हाँ, जेवीएम ऑलरेडी बाइंड मीन्स that port is already giving services or has already been used by some other program.
Okay, like if you have installed, let me give one example which you have on your machine. आप अगर अपने machine पे if you install Oracle on same machine and then later on if you install netbeans, और netbeans में भी आप glassfish या apache server install करते हो, तो जो पोर्ट नंबर Oracle का है वही पोर्ट नंबर glassfish का by default पोर्ट नंबर है. So if you don't check port number of glassfish और apache server एंड देन ओरेकल सर्विसेज भी ऑन है और आप नेटबीन्स भी ऑन करते हो ना, तो आपका नेटबीन का जो सर्वर है दैट इज अपाचे एंड ग्लासफिश सर्वर, फिर वो रन नहीं होता, आपको एरर देता है कि ऑलरेडी बाइंड करके. मिस्टेक कहाँ था सलमा? मिस्टेक बहुत ही सिल्ली था. मैंने यहाँ पे पीएस में ना प्रिंट लिखा था, प्रिंट एलएन लिखना है आपको. पीएस क्या है? प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, उसको मैंने प्रिंट लिखा था, इसको आपको प्रिंट एलएन लिखना है. सो सिली मिस्टेक इट वाज. एंड आई हाउ आई कैन इग्नोर सच मिस्टेक? मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ था. ओके, सो आई एम हैप्पी आई गॉट आउटपुट एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. कैन आई गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम? टाइप यस यस यस. ठीक है, तो नया प्रोग्राम बनाते हैं. नया प्रोग्राम ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं एडब्ल्यूटी में नहीं करा रही हूँ. आई एम क्रिएटिंग दिस प्रोग्राम यूजिंग स्विंग, बट आपको पता भी नहीं चलेगा. हाँ, प्रिंट यूज करते हैं बट ये वर्क नहीं हो रहा है. प्रिंट प्रिंट की वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा था. मुझे लग रहा है ना कि जब डेटा सेंड हो रहा है तो वो सेंड हो रहा है ना स्ट्रीम फॉर्मेट में, बाइट फॉर्मेट में, तो शायद उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो प्रिंट वर्क नहीं हो रहा है, प्रिंट एलएन वर्क हो रहा है. ओके, सो ओके स्टूडेंट, सो चलो फटाफट एक नया प्रोग्राम बनाते हैं. आपने एडब्ल्यूटी किया है बट मैंने आपको बता आईडीई के थ्रू नहीं बताया है. नाउ दिस इज अ चांस यू कैन लर्न कि आप एडब्ल्यूटी आईडीई से कैसे बना सकते हो. सो आई एम गिविंग नेम एज चैट सर्वर, और एक नया प्रोजेक्ट और बना लेती हूँ, उसका नाम चैट क्लाइंट देते हैं. Okay, so two project I am having, chat server and chat client. Unnecessary, I am deleting this. आप ये जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, ये डिलीट नहीं करने का, क्योंकि ये बताता है कि कौन किसका ऑथर है. सो समटाइम व्हाट हैपेंस, समबडी कॉपीज योर कोड, तो वो भूल जाते हैं ये सब निकालना, ये वाली लाइन, लाइक यहाँ पे ऑथर जैसे दिखा रहा है, तो ये वाली लाइन लिखना भूल जाते हैं. So we come to know that this is not his or her program. He has taken from somewhere else. Okay. So never remove that. ऐसा मेरा मानना है. चलो स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली इसमें कुछ लिखना नहीं है, मैं GUI बेस्ड प्रोग्राम बना रही हूँ. सो स्टूडेंट नाउ चेक आउट व्हाट आई एम डूइंग फॉर मेकिंग फ्रेम. मैं पैकेज पे राइट क्लिक कर रही हूँ एंड आई एम टेकिंग न्यू एंड जे फ्रेम. जे फ्रेम इज वेरी सिमिलर टू योर फ्रेम, तो आई एम गिविंग नेम ऑफ दिस फ्रेम एज सर्वर. ओके, सो नाउ यू डोंट हैव टू राइट ऑल दैट कोड जो आप करते थे, बटन का ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर एक्शन लिस्नर सब मैनुअली करते थे ना स्टूडेंट. हियर इट इज गोइंग टू टेक हार्डली 5 minutes फॉर फिनिशिंग दिस GUI. No, it's not necessary to put every time packages, but in NetBeans, or if you are using any of the IDE, sorry, if you are using any of the IDE, they by default put your program into packages. So why they put your program into packages? Because later on you can make jar file and you can distribute to others. तो वो जार फाइल पे सिर्फ क्लिक करेंगे, आप उनको सोर्स कोड थोड़ी ना दोगे, आप उनको जार फाइल दोगे, वो जार फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होने लगेगा, बिकॉज उनको कंपाइल नहीं करना है. ओके, सो देयरफॉर आईडी फॉलोज दिस काइंड कन्वेंशन. वो हमेशा आपके प्रोग्राम को क्या करते हैं, पैकेजेस में डाल देते हैं. सो स्टूडेंट चैट ना, मैं बेसिक चैट बनाने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आई एम गोइंग टू टेक वन टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया, व्हाई आई एम टेकिंग टेक्स्ट एरिया, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आएंगे तो मल्टी लाइन मैसेजेस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने टेक्स्ट एरिया. तो यू कैन सी हियर आई एम हैविंग व्हाट फ्रेम में, ये क्या है, ये आपका फ्रेम है और ये आपके टूल बॉक्स है.
कैन यू सी यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे AWT भी है, बट मैं AWT नहीं कर रही हूँ. अब देखो कंपैरिजन ही देख लो. AWT वी हैव वेरी लेस कंट्रोल, स्विंग वी हैव मेनी मोर कंट्रोल. फंक्शनैलिटी सब सेम है, तो मैं AWT नहीं कर रही हूँ, स्विंग को यूज कर रही हूँ. तो लेट मी चेंज नेम ऑफ दिस वेरिएबल. टेक्स्ट एरिया है, मैंने TA दे दिया नाम. और फिर एक क्या करती हूँ, एक मैं टेक्स्ट फील्ड ले लेती हूँ. टेक्स्ट फील्ड, व्हाई आई एम टेकिंग टेक्स्ट फील्ड, सो दैट यूजर कुछ जो मैसेज सेंड करना है ना, वो मैसेज वो यहाँ पे टाइप कर सके. ओके, सो आई एम टेकिंग दिस टेक्स्ट फील्ड. राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट, इसको ब्लैंक कर दो. और फिर इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दो, T1 कर दो. The program which I'm doing in NetBeans, but this facility is there in Eclipse, IntelliJ, everywhere. ओके, ये सब में है, आप यूज कर सकते हैं. स्विंग, ऑफ कोर्स स्विंग, बिकॉज स्विंग इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सो नाउ आई एम कीपिंग वन बटन, और इस बटन का टेक्स्ट मैं एडिट कर दे रही हूँ. इसका टेक्स्ट मैं क्या कर देती हूँ, सेंड. और सिंस ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ही ब्लैंक रख के अजीब सा लग रहा है, तो इसके आगे मैं क्या करती हूँ, एक लेबल ड्रैग ड्रॉप कर देती हूँ. एंड इन दैट लेबल आई एम चेंजिंग टेक्स्ट एज एंटर मैसेज. ओके, आप इसको बड़ा छोटा जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हो. मैं ज्यादा बड़ा नहीं ले रही हूँ, बिकॉज मुझे दो प्रोग्राम साथ में रन करने हैं, तो डेस्कटॉप पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा. देयरफॉर आई एम नॉट टेकिंग इट सो बिग. ओके, सो डन दिस. ये बेसिक बन गया. स्टूडेंट, यू माइट बी वंडरिंग, ये देखो आपका ना, इसका पूरा जो आप लिखते थे ना, हमने ऑट के सीरीज अटेंड किए हैं. वी हैव सीन वी राइट कोड मैनुअली, ऑल कोड. अभी आपको मैं दिखाती हूँ एक कोड अनफोल्ड करके. ऑल द कोड हैज बीन जनरेटेड. कैन यू सी, मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया तो टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बन गया. बटन लिया तो बटन का ऑब्जेक्ट. जिधर मैंने पोजीशन किया वो पोजीशन आ गया. सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट होता है. ये आपको इसको कुछ नहीं करना है. Okay, that is what benefit of IDE. So always use IDE for your project. It give does productivity faster. आप जल्दी बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट को. एंड देन यू कैन सेट द प्रॉपर्टी ऑल्सो. आपको थोड़ी फॉन्ट ऑन्ट भी इंक्रीज करनी है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो वो सब आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है. यहाँ पे मेरा फॉन्ट ऑन सिखाना काम नहीं है, तो मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ लॉजिक पे. बट आई थिंक बहुत छोटा दिख रहा है स्क्रीन पे, देयरफॉर आई एम चेंजिंग द फॉन्ट. इवन आई एम चेंजिंग फॉन्ट ऑफ दिस टेक्स्ट एरिया. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, इसका फॉन्ट यहाँ पे है. ओके, सो दिस इज व्हाट माय सर्वर डिजाइन. थोड़ा मैं इसको नीचे लाके ऊपर एक लेबल रख देती हूँ, सर्वर. स्टूडेंट, आप कलर ओलर आपको जैसे देना है, इमेज उमेज सब कुछ डाल सकते हो. जैसे चार्ट एप्लीकेशन होता है ना, परफेक्टली यू कैन मेक लाइक दैट. बट मैं थोड़ा सिंपल वे से बना रही हूँ. ओके, ये मेरा सर्वर बन गया. नाउ क्लाइंट विल ऑल्सो हैव सेम काइंड ऑफ GUI. एम आई गोइंग फास्ट स्टूडेंट, एम आई गोइंग फास्ट? Yes, code you have to write only logic code, not GUI code. आपको GUI का कोड नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लॉजिक का कोड लिखना है नेटबीन्स में. ये आपका देखो फ्रेम है. यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस ऑल कोड इज जनरेटेड. कैन यू सी, एक्सटेंड्स फ्रेम हो गया क्योंकि आपने फ्रेम ले लिया. फ्रेम में मेन मेथड होता है तो मेन मेथड भी आ गया. कंस्ट्रक्टर होता है तो कंस्ट्रक्टर भी आ गया. सब कोड ऑटो जनरेटेड है, सिर्फ आपको लॉजिक का कोड लिखना है. So now, what I'll do, if you want to change color, anything, you can do all this thing. You can play with
GUI part, so I'm not focusing more on that GUI part. So अब क्या करते हैं, I need same GUI for my client also. So I'm going to my client program, client के project में जाते हैं, and then in client project I'm creating again new frame, so new J frame, and let me give name as client. And instead of doing same repetition of all that thing, what I'll do, ये सबको मैं क्या कर लेती हूँ, मैं select करती हूँ and I'll copy and paste to my client. So this GUI will copy and paste it over here. So can you see, आपका बन गया, client भी बन गया. Just only I have to change this text. This is what my client. Hope you all understood. No, you have to learn these components, because after all in your theory exam, examiner always asks some of the programs related to your GUI based. So for writing theory, you should know how these are created. Okay, and we have done all that thing. So you can go to my channel and you can see my videos related to how to create components and what are these components. So basically आपको एक बार पता चल जाएगा AWT में, तो स्विंग में वही रिपीटेशन है विथ फ्यू ऑफ द न्यू फीचर्स. सो नाउ आई एम डन विथ माय बेसिक डिजाइन. सो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू राइट नेटवर्किंग लॉजिक. सो आई विल स्टार्ट विथ अ सर्वर प्रोग्राम. सर्वर के सोर्स कोड में जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, वेरिएबल्स बना लेते हैं. सो व्हाट वेरिएबल्स आई नीड इन सर्वर, सबको याद है, सब सर्वर में क्या चाहिए, सर्वर सॉकेट. कम ऑन स्टूडेंट, हेल्प मी, टाइप करते जाओ. सर्वर सॉकेट कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, लेट मी नो. सर्वर सॉकेट, व्हाट अदर वेरिएबल आई नीड सॉकेट. व्हाट नेक्स्ट वेरिएबल आई नीड. सो यू कैन सी, मैं यहाँ से ऑल्ट एंटर कर रही हूँ, वो इंपोर्ट हो जा रहा है, और आप कंट्रोल स्पेस दोगे तो भी वो ऑटोमेटिकली बताता है. और सर्वर सॉकेट में क्या चाहिए रहता है, टू वे कम्युनिकेशन है, तो वी नीड प्रिंट स्ट्रीम. यस, वो हाँ, वो सारा कोड है. व्हाई आई एम डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल ग्लोबली, बिकॉज मेरा सेंड और रिसीव का कोड है. सेंड बटन पे करके मैं सेंड करूंगी और मेन मेथड के थ्रू मैं रिसीव करूंगी. यस, प्रिंट स्ट्रीम. एंड देन नाउ आई एम नॉट यूजिंग स्कैनर. आप स्कैनर भी यूज कर सकते हो, बट सिंस स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्कैनर बता दिया है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ. अब स्कैनर के थ्रू नहीं कर रही हूँ, मैं थर्ड वाला पार्ट बता रही हूँ आपको, डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड डेटा आउटपुट स्ट्रीम. इज दिस ओके और यू ऑल वांट विथ स्कैनर? मुझे चलेगा कोई भी, बट वर्साटाइल हो जाने दो, तीन अलग अलग चीजें आपको आ जाएगी. एंड एट द एंड मैं आपको सारे कोड नोटपैड में पेस्ट करके दे दूंगी, आप उसका प्रिंट स्क्रीन ले लेना, और यू कैन गो टू माई चैनल लेटर ऑन, यू कैन सी. ओके, सो बना दिए मैंने वेरिएबल. अब डेटा प्रिंट स्ट्रीम नहीं लेती हूँ, प्रिंट स्ट्रीम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम ले रही हूँ. ओके, हाँ, ओके, बन गया, ये सारे वेरिएबल्स बन गए. अब नाउ व्हाट आई डू, आई गो टू माय मेन मेथड. Where is my main method? This is what my main method. These are what generated code. Don't touch this generated code. वो आपके GUI सबके creation के लिए है. तो ये मेरा main method है. Now I'm going to write lines. The line for creating socket, server socket, all that. So SS equal to new socket, not socket. It's server socket. Student will be able to finish with by 6:30, don't worry. Okay, so server socket, इसको किसी पोर्ट पे रन कर देते हैं, तो चलो इसको रन कर देते हैं 4567 पे. नाउ s इज इक्वल टू क्या आएगा, ss डॉट एक्सेप्ट.
when I was in my final year exam, practical exam, I got this program in my practical exam, two-way communication. Okay, so student, it is showing me one error that non-static variable cannot be referenced from static context. इसका मतलब क्या है? ये देखो SS और S को आपने ऊपर डिक्लेयर किया है और आप उसको यूज कहाँ पे कर रहे हो? मेन मेथड में, और मेन क्या होता है? स्टैटिक. सो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा. ठीक है? I hope you all understood this line. You cannot refer non-static variable inside static context. तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? स्टैटिक बना दिया. Now it is showing me error. What error it is showing? कि अरे भाई ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इस एक्सेप्शन को कॉट करो. Which code you are asking? Your name is also reconnecting. Okay, so these are the auto generated code. ये सब आपके GUI के लिए आया है. मैं आपको एक्सपांड करूंगी तो ये आप फेंट हो जाओगे. ये कोड को एक्सपांड करूंगी तो ये सारे ऑटो जनरेटेड कोड हैं. हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है? वो आप उसको टच भी नहीं करने का. ये सब आप जो लेते हो ना वहां पे ड्रैग ड्रॉप करते हो, वो देखो आपने टेक्स्ट एरिया लिया, टेक्स्ट फील्ड लिया, बटन लिया, लेबल लिया, उसका फॉन्ट चेंज किया, तो सब की लाइनें जनरेट होती है बिहाइंड में. सो दिस इज कोड बिहाइंड. उसको आपको टच नहीं करना है. सो स्टूडेंट, इट इज आस्किंग मी भाई ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ? आई विल पुट दिस इन ट्राई कैच ब्लॉक. या तो यू कैन क्लिक हियर और वो आपको बोलेगा कि एक्सेप्शन थ्रो कर दो. एंड देन लेट मी प्रिंट द मैसेज सो दैट अगर कुछ एरर आए तो मुझे पता चले. ओके, चला गया ये एरर. अब क्या करते हैं? डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. तो dis इक्वल टू न्यू डेटा. स्टूडेंट, एम आई गोइंग फास्ट और यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, सो इनपुट स्ट्रीम मतलब क्या होता है? रीड करना. तो रीड करना है तो क्या करेंगे? एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम. वही तो हमने स्कैनर में किया. सेम आई डिड इन बफर रीडर एंड सेम आई एम डूइंग इन डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर. ऑल आर सेम, बट आई टेल यू मैं डेटा इनपुट स्ट्रीम क्यों यूज की हूँ. स्टूडेंट, यू ऑल नो यूनी एनकोडिंग और यूनिकोड कैरेक्टर्स. आपको पता है कैरेक्टर फॉर्मेट्स. लेट मी फिनिश आउट दिस लाइन, देन आई कम बैक टू दैट कॉन्सेप्ट. सो आउटपुट स्ट्रीम के लिए क्या लेते हैं? netbeans in practical exam, but beginning topic I think they don't allow. Later on they allow. Like in my college only I allow from semester 4. I don't allow them in semester 3 because semester 3 is just basic Java and core Java. If I allow them, then everything will be they will not understand anything, and when they face interview, they go for interview, then they will unable to answer कि ये क्या क्या होता है. So to basic or to make their basic strong, I don't allow them. So I created this object, student. So now let me tell you why I'm using this data input stream and data. Student, you know, you are doing client and server application, so it's not necessary that your client and server they are on the same machine, which I'm doing now because I don't have two different machine. So अगर आप दो डिफरेंट मशीन्स पे कनेक्ट करोगे तो आपको पता है क्या सर्वर कौन से प्रोसेसर पे रन हो रहा है और डेटा किसको जा रहा है वो कौन से प्रोसेसर पे रन रहा है. आर यू अवेयर ऑफ दैट? नो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. So we want to make this machine independent.
मतलब डेटा फॉर्मेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा डेटा प्रोसेसर पे अलग अलग फॉर्मेट पे सेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल सेंड्स डेटा फ्रॉम एलएसबी टू एमएसबी और आईबीएम पे एमएसबी टू एलएसबी होता है। तो अगर आप यहाँ से कुछ डेटा सेंड करोगे तो वहां पे अलग, और देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग डेटा मिलेगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, इसका एक्चुअली में क्या यूजेस है, ये क्या करता है, आपके प्रोसेसर से इंडिपेंडेंट कर देता है। मतलब अगर एलएसबी टू एमएसबी होगा या एमएसबी टू एलएसबी होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो you can use for data input stream for reading the data, and output stream is for writing the data. Now comes what? UTF. I hope you have heard this word, but I'm not sure whether you are and you know detail of this or not. Does anybody know UTF? Reconnecting, I said that depends on your college. I allow Notepad in semester 3 and NetBeans or any IDE in semester 4 onwards. Does anybody know UTF? किसी को यूटीएफ पता है क्या होता है? अच्छा, नहीं पता है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यूटीएफ इज नथिंग बट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। सो आप वेबसाइट्स बनाते हो, आपका वेबसाइट कौन से मशीन पे ओपन हो रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है, आपको पता है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूटीएफ यूज करते हैं। व्हाट इज Unicode standard has become a success in the implementation in HTML, XML, JavaScript, email, ASP, PHP, etc. तो ये सारे सब लोग क्या यूज करते हैं, यूटीएफ ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको टारगेट मशीन नहीं पता है और आप वेबसाइट कहाँ पे ओपन कर रहे हो, वेदर यू ओपनिंग इट ऑन डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, वेदर यू आर ओपनिंग ऑन ब्राउजर, योर लैपटॉप ब्राउजर और वेयर। तो यूनिकोड फॉर्मेट क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है which is supported in many of the operating system and almost on all browsers. So instead of using what your like ASCII or character encoding, हम क्या यूज करते हैं, यूनिकोड करते हैं। कभी ना अगर आपको इसका डिटेल देखना है ना, यू गो टू एनी वेबसाइट, आप राइट क्लिक करके पे जाओ तो आप उसका एनकोडिंग फॉर्मेट देखोगे, UTF-8 या UTF-16 ही होता है। सो जो आप यूनिकोड होता है ना वो क्या सेट होता है, और यूटीएफ जो होता है ना वो एनकोडिंग होता है। नाउ लेट मी थोड़ा सा हमारे टॉपिक से अलग है ये कॉन्सेप्ट, comes under networking because we are sending data, we are exchanging data, so we should know कि हाँ टारगेट मशीन पे डेटा प्रॉपर जाना भी तो चाहिए ना। तो इफ यू आर यूजिंग यूनिकोड देन व्हाट हैपेंस, अगर आप हेलो सेंड करते हो ना तो एच का एस्काई वैल्यू जाता है, ई का एस्काई वैल्यू की एस्काई वैल्यू जाती है किसमें, यूनिकोड में। बट इफ यू आर यूजिंग एनकोडिंग देन व्हाट हैपेंस, द बाइनरी वैल्यूज गोज। तो बाइनरी एच की तो बाइनरी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी चाहे कोई भी मशीन ले लो। तो इसलिए ये बाइनरी कोड एनकोडिंग क्या करता है, आपके डेटा को बाइनरी कन्वर्ट करता है। और कैरेक्टर सेट्स क्या करते हैं, जो प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं। सो इफ यू आर यूजिंग एस्काई, तो एस्काई में एक टेबल है, सिर्फ उतना ही कैरेक्टर है, उसके बाद अगर आप नॉन प्रिंटेबल नॉन कीबोर्ड कैरेक्टर डालते हो तो वो आएगा ही नहीं, आपको प्रॉब्लम देगा। तो इसीलिए वेबसाइट जो भी डेवलप करते हैं वो यूटीएफ ही यूज करते हैं। और यही मेरा मेन पर्पस है, आई एम यूजिंग व्हाट, data input stream and data output stream, because I wanted to use the method read UTF and write UTF, which is not there in scanner. I'm not very much sure with the scanner, शायद नहीं है, मैंने स्कैनर के लिए चेक नहीं किया है, बट बफर रीडर में तो नहीं है। इतना समझ गया स्टूडेंट, मैंने ये क्या किया, मैंने सर्व वेरिएबल्स बना दिए, स्टैटिक वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि मैं ये सबको मेन मेथड में एक्सेस कर रही हूँ, इसलिए मैंने सबको स्टैटिक बना दिया। और फिर उसके बाद मैंने वाली लाइन लिख दी। अब क्या करती हूँ, आई गो टू क्लाइंट और सेम टास्क वहां पे भी करती हूँ। तो यहाँ से डिजाइन से सोर्स में जाने के लिए इसको करना पड़ेगा, और फिर मैं मेन मेथड के नीचे आ जाती हूँ।
try catch. Okay, I'll copy and paste that line. यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक्सेप्ट भी नहीं आएगा. Okay, so we have to create variables. So variable वाली line भी I'll copy paste and I'm declaring that in class. Are you all understanding, student? आपको समझ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? I hope you all are understanding and you are paying attention too. Then now socket s equal to new socket. So in my previous program, I passed 127.0.0.1. Now I am passing localhost. Nobody asked, मैम अगर दो डिफरेंट मशीन से करेंगे तो क्या पास करेंगे? आपको आईपी एड्रेस पास करना पड़ेगा सर्वर का. आई वॉज वेटिंग somebody should ask me this, बट किसी ने पूछा नहीं कि मैम अगर दो मशीन से करेंगे तब हमको क्या पास करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ये हो गया. Okay, so if you are working with two different machines, so can you all answer localhost की जगह क्या आएगा? IP address. But किसका IP address आएगा? Whose IP address? सर्वर का IP एड्रेस. सर्वर जिस मशीन पे रन हो रहा है ना, आपको उसकी IP एड्रेस पास करनी पड़ेगी. ओके, ये कर दिया हम लोग ने. अब मुझे क्या करना है? मुझे जो मेरा डेटा आ करके उसको मुझे टेक्स्ट एरिया में प्रिंट करना है. तो मैं टेक्स्ट एरिया में उसको प्रिंट करूंगी. और दूसरी बात मुझे क्या करना है, कब ये स्टॉप है मेरा कोड? जब तक क्लाइंट एग्जिट नहीं बोलेगा. चैटिंग मतलब आप कैसे बाय बोलते हो तब खत्म होता है आपका चैटिंग, वैसे ही यहाँ पे मैं कब स्टॉप, जब क्लाइंट मुझे एग्जिट मैसेज सेंड करेगा. तो उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग वन वेरिएबल ओवर हियर, string msg, and then just see this line, while. मैं क्या लिख रही हूँ? आई एम राइटिंग while not msg dot equals. आई होप ये आपको पता है क्यों यूज कर रही हूँ मैं इक्वल्स मेथड, बिकॉज मुझे चेक करना है कि यूजर जब तक टाइप नहीं करता है तब तक क्या करो, रन करते रहो. एग्जिट. ओके, जब तक एग्जिट नहीं होगा मैं क्या करूंगी, जो डेटा मुझे आएगा मैं रीड करूंगी, और रीड करके मैं कहाँ पे प्रिंट करूंगी? टेक्स्ट एरिया में. सो फॉर दैट राइटिंग msg इज इक्वल टू, कैसे रीड करोगे आप लोग? कैसे रीड करेंगे? रीड करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है? dis. dis डॉट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, dis डॉट नेक्स्ट लाइन. ओके, इट्स नॉट नेक्स्ट लाइन, रीड यूटीएफ है, शायद मैं मिस्टेक कर रही हूँ. यस, नेक्स्ट लाइन डेप्रिकेटेड हो गया है. ओके, सो आई हैव रेड द मैसेज, आई एम प्रिंटिंग दैट मैसेज इनटू माय टेक्स्ट. टेक्स्ट एरिया में कंटिन्यूअसली करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपेंड करना पड़ेगा. और मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ? क्लाइंट. क्योंकि क्लाइंट ने मैसेज मुझे सेंड किया है, इसलिए मैं क्लाइंट प्रीफिक्स दे रही हूँ और उसके बाद मेरा मैसेज प्रिंट कर रही हूँ. होप स्टूडेंट यू हैव दिस पार्ट. Okay, it is showing me non-static variable TA cannot be accessed from static reference. अब ये क्या बता रहा है? What it is showing me over here, that TA is non-static. Can you see? यहाँ पे जो area का ऑब्जेक्ट है वो नॉन स्टैटिक है, तो मुझे उसको भी स्टैटिक करना पड़ेगा. तो मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगी, कोड में जाऊंगी और उसको मैं स्टैटिक कर दूंगी. ओके, तो मेरा ये एरर भी चला गया.
ओके, मैं कहीं और डिजाइन में, प्रॉपर्टीज, कोड, ओके ओके, स्टैटिक हुआ ही नहीं, so to source again and now my error has gone. Yes, ठीक है. Now what I'll do, I'll go to client also. ये कौन था? ये रीडिंग का कोड था. क्लाइंट सेंड करेगा तो सर्वर रीड करके टेक्स्ट एरिया में डिस्प्ले करेगा. अब मैं सेम कोड किधर जाऊं? ये वाला पूरा लाइन मैं कहाँ पे क्लाइंट के कोड में भी लिखती हूँ. तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैव ऑलरेडी दैट कोड. मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं, कॉपी पेस्ट कर दूं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड क्या हो रहा है. तो सेम लाइन, ये वाली लाइन मैं फिर से कॉपी पेस्ट करके वहां पे डाल सकती, सिर्फ मुझे सर्वर सेंड करना पड़ेगा. ओके ओके ओके. Already data stream that are there, only I have to put this while line and declare a variable msg. Okay, so reading code done. Again, it is showing me this text area is non-static. Design में जाओ, right click करो, and then go to properties, go to code, and make it static. Student, are you all able to understand what I'm doing over here? ओके, सो अब क्या करना है? रिसीविंग का कोड हो गया, अब हमको क्या करना है? सेंडिंग का कोड लिखना है. लिए आपने जो सेंड बटन लिखा है ना, उसके ऊपर आपको ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा. हाउ टू जनरेट इवेंट? जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस बटन. इट इज गोइंग टू जनरेट व्हाट? एक्शन इवेंट. सो यू कैन सी एक्शन परफॉर्म इवेंट. ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ? राइट कर रही हूँ मैसेज. I have created variable message and then whatever is there in my text box, I am retrieving that. और मैंने trim किया है. Trim मतलब if user has by mistakenly press, तो वो space delete हो जाना चाहिए. Space कोई message नहीं होता है. And then I am using write UTF method. Same code copy and paste to my client. और client के कहाँ पे? Send button पे. Okay, done student. Now let's run the program. Okay, so my server started. I'm running my client also. Okay, so this is my server and this is my client. दोनों स्टार्ट हो गए. कोई किसी को भी मैसेज सेंड कर सकता है. कैन यू सी? हेलो गुड इवनिंग इट हैज प्रिंटेड. और आगे क्या प्रीफिक्स किया है? क्लाइंट. और यहाँ पे मैं शायद मैंने सर्वर चेंज नहीं किया. हेलो, हाउ आर यू? ओके, सो यहाँ पे भी क्लाइंट ही प्रिंट कर रहा है बिकॉज स्टूडेंट आई जस्ट कॉपी द कोड. सो इट शुड प्रिंट सर्वर ओवर हियर. क्लाइंट पे सर्वर प्रिंट करना चाहिए, सर्वर पे क्लाइंट. एंड देन यू कैन प्रिंट मैसेज, एनी मैसेज. वेलकम टू माय चैनल. Okay, so I'm enjoying chatting with it myself. So welcome to my channel
and please subscribe. Okay. Yes, student, are you all enjoying this session? Just type yes, no, yes, no. एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे क्लियर चाहिए था ये इसको क्लियर करने के लिए, नहीं तो मुझे मैनुअली क्लियर करना पड़ रहा है. यस. ओके, लेट मी चेंज द थिंग. ये जो मैंने यहाँ पे क्लाइंट क्लाइंट प्रिंट कर रहा है ना, वो अजीब सा लग रहा है. क्लाइंट में ही क्लाइंट प्रिंट कर रहा है. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन ट्राई दिस आफ्टर योर एग्जाम्स. आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो. यू कैन सी पावरफुल जावा इज. Okay, so this is my client and this is my server. I and click on send, and then hello. Then just एक कमी लग रही है मुझे, क्लियर बटन नहीं है. Okay, so I'm just sending my emotions. Please subscribe, bell icon, like and comment queries. Okay, students. Okay, if you want to display client and server message in the both places, so for displaying, for sending, I have used in my this part main method. So you can keep one more button, or you can receive button, and then you can append the information on text area also. ठीक है, बिकॉज इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, बट मैंने सिर्फ अपेंड नहीं किया है. आप उसको अपेंड करके डिस्प्ले कर सकते हो. When we send print it, what does it mean? I didn't get. When we send print it on text area. Huh. We wrote that code inside main method. Okay, now just see what will happen. What will happen when your code will get exit. जब मैं exit करूंगी ना, तो देखो अब क्या होगा. बाद आपका प्रोग्राम सेंड नहीं कर पाएगा. एग्जिट किया है तो मैंने, जब तक एग्जिट नहीं है तब तक वो. ओके, कैन यू सी नाउ? आई एम नॉट एबल टू सेंड नाउ. मैं टाइप तो कर ले रही हूँ, बट मेरा डेटा सेंड नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने एग्जिट कमांड टाइप कर दिया. This HP, I didn't get your question. When we send print it on text area, what is that? Okay. सो अगर आप एग्जिट लिख दोगे तो उसके बाद आपका कम्युनिकेशन हॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोडिंग में एक लाइन लिखी है. व्हाट इज दैट लाइन? टिल इट इज नॉट इक्वल टू एग्जिट. जब तक एग्जिट नहीं है तब तक क्या करो करो और टेक्स्ट एरिया में अपेंड करते जाओ. बट अगर एग्जिट मिल गया तो क्या करना है आपको? आपको स्टॉप कर देना है. On event when we send to other users. So are you asking that here I'm sending only client or server message? If it is client, I'm sending only server message. If it is server, then I'm printing only client message. So you want to print both server and client message. Is it the question? Jagraj also asked same question.
you can do now, this you are doing over here, बट ये जो बटन में आपने डेटा रीड किया है ना, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे तो हमने डेटा जो डीआईएस से रीड किया और प्रिंट किया, कौन सा डेटा जो वहां पे आया, जब आप क्लाइंट में क्लाइंट कर रहे हो ना, तो ये जब आपकी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो डेटा सेंड करने के पहले टेक्स्ट बॉक्स का डेटा रिट्रीव करके आप उसको टेक्स्ट ए कर दो. ओके, सो यू कैन अपेंड दैट टू टेक्स्ट एरिया. लेट मी चेक आउट, मैं चेक करती हूँ इधर, शायद होना चाहिए TA डॉट अपेंड, मेरा जो टेक्स्ट एरिया का डेटा है दैट इज MSG आउट. Yes, HP, your question was same ना. हाँ, okay, जगराज also asked same question. बहुत डिफिकल्ट, आपको सिर्फ सेंड बटन पे वो डेटा उस टेक्स्ट एरिया में अपेंड कर देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं. होपफुली रन होगा. स्टूडेंट यू नो, ये है ना 50 मार्क्स के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं. लाइक देर आर कंट्रीज वो स्टूडेंट को पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट असाइन करते हैं. सो दिस इज 50 मार्क्स प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल भी. ओके, सो अब मैं यहाँ से सेंड करती हूँ हाय. देखो यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया. हेलो, केम छो. यस, बट ये पिछला चला, ये ओके, मैंने न्यू लाइन नहीं प्रिंट किया इसलिए ये ऐसे आ रहा है. आप न्यू लाइन कर दोगे, स्लैश एंड डाल दोगे ना, ये प्रॉब्लम भी चला जाएगा. Since I have not printed new line, therefore I'm getting this problem server पे. HP and your HP and Jagraj, your doubt is clear. Have a great career ahead. Okay. Um, व्हाट यू आर आस्किंग, व्हाट्सअप भी चैट एप्लीकेशन ही है उनका, बट उन्होंने बहुत कुछ, ये तो मैंने सिंपल एक बेसिक एप्लीकेशन बनाया है. व्हाट्सअप दे हैव मेनी मोर थिंग, उनका एंड टू एंड एनक्रिप्शन भी है, एंड देन व्हेन यू रीड द मैसेज इट शोज डबल टिक विथ ब्लू, व्हेन द मैसेज इज रिसीव टू द सर्वर वो डबल ग्रे दिखाता है. बहुत कुछ उन्होंने किया है. दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन, बट यू कैन डू एप्लीकेशन इफ यू ब्राउज दिस थिंग. आपको बहुत सारे कलरफुल इमेजेस के साथ आप इसको बना सकते हो. जस्ट करना है, सेंड करना है, रिसीव करना है. यहाँ पे तो आई एम ओनली रिट्रीविंग व्हाट टेक्स्ट मैसेज, बट स्टूडेंट यू कैन रिट्रीव मल्टी मैसेजेस ऑल्सो. इमेज, ऑडियो, वीडियो भी आप रिट्रीव करके डिस्प्ले कर सकते हो, बट उसके लिए स्विंग के एडवांस कंपोनेंट लगते हैं. लाइक अगर आपको इमेजेस डिस्प्ले कर तो इमेज आइकन लगेगा, अगर आपको मल्टीमीडिया करना है तो आपको थोड़े अलग कोड लगेंगे आपको वहां पे, बट आप यही टास्क करो, रीड और राइट करना. Okay, so student, I hope you all have liked this session and you have learned something from this session. So now you have learned so many things. You have learned AWT, you have learned networking. You can create a great applications. Okay. So does anybody having any doubt? I'm changing this line. ये थोड़ा सा स्लैश एंड डाल देती हूँ एंड एग्जिट करते हैं. ओके, सो मैंने एग्जिट टाइप कर दिया है, तो अब मैं सेंड नहीं कर पा रही हूँ. Does anybody having any doubt? We'll quickly wind up the session. Okay. So after this, just print slash n.
So it will come into the next line. Student, if you want screenshot, let me show paste this code. वो जो मैंने टू वे कम्युनिकेशन किया था उसका कोड मैं आपको दिखा देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो. Okay, no doubt. Very good, student. I'm happy that you all have understood the concept. So you can take screenshot of this program. This is a number server program जो मैंने scanner use करके किया था. Okay, thank you, Roshni, Gaurav, Salma, Glory. Okay, so take the screenshot of this. ऊपर सारे पैकेज किए हैं. And now this was a server program. You can take screenshot of client program also if you want to try, or you can visit my channel. पूरा वीडियो आपको अवेलेबल रहे. Okay. So that's all for two-way communication. In my next video, I'm going to take UDP, how to use UDP for sending packets, datagram packet और datagram socket के through करेंगे हम लोग. एक सेशन वो लगेगा, और अगर आता है तो I'll try to wind up by tomorrow. Otherwise, I need one more session. So tomorrow 1 hour and one more 1 hour. So by Monday, I will be able to working topic. Okay, students. So thank you, students, for being with me till end. I hope you all have learned something by this session. So please share my link to your friends also, and my channel to your friend, and ask them to join. Everyone for watching my videos. Bye bye, and have a fantastic evening. Okay, so no. So I hope nobody is having any doubt. So I'm just ending the streaming. Bye bye, student. Thank you, Shraddha. Thank you, Hartej. Thank you, Manthan. Thank you, everyone. Shabba khair, Gaurav. Okay, bye, Zubair.